Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, everyone. Today our topic is on fundamental forces in nature. नेचर में जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस कितनी टाइप की हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं ऑफ द स्ट्रेंथ। हमारे पास चार जो है वो डिफरेंट फोर्सेज हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। दे आर द न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द वीक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें सबसे पहले जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है, विच इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के दरमियान इट हैज वेरी शॉर्ट रेंज एंड इज नेग्लिजिबल फॉर सेपरेशन। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स greater than approximately 10 raised to power minus 15 meters. So this is very strong force, but इसका एक्शन जो है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है, 10 raised to power minus 15 meter, about the size of nucleus. So the electromagnetic force उसके बाद है सेकंड नंबर पे, which binds atoms and molecules together, ठीक है, जिससे एटम और मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे जो है वो to form ordinary matter has strength of approximately 10 raised to power minus 2 times. ठीक है, strength इसकी 10 raised to power minus 2 times lesser than that of the nuclear force. This long range force decreases in magnitude as the inverse scale of the separation. And one number of scale become the weak force. उसके बाद weak force है, ठीक है, weak force क्या है? Short range force. ये भी short range है वो, that tends to produce instability. Okay, ये instability produce करती है in certain nuclei. ठीक है, certain nuclei में instability produce करती है जिसकी वजह से वो stable नहीं रहते. So it is responsible for decay processes and its strength is only about 10 raised to power minus 5 times that of the nuclear force. Strength का ऑर्डर अगर देखें तो ये 10 raised to power minus 5 times है nuclear force की comparison में. So finally the gravitational force. Gravitational force is very long range force, ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ देखें सिर्फ 10 raised to power minus 39 है न्यूक्लियर फोर्स की निस्बत that of the nuclear force. Although this familiar interaction is the force that holds the planets, stars and galaxies together, its effect on elementary particles is negligible. ठीक है, elementary particle के ऊपर इसका effect जो है वो ना होने के बराबर ही समझा जाता है. उसके बाद देखिए ये फोर्सेस किस तरह एक दूसरे पे एक्ट करती हैं, यानी क्या कौन से फील्ड पार्टिकल्स हैं जिनके थ्रू ये फोर्सेस एक दूसरे पे एक्ट करती हैं. उसमें देखिए मॉडर्न फिजिक्स द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कैरीड अ स्टेप फर्दर. दीज इंटरेक्शंस आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एंटिटीज कॉल्ड फील्ड पार्टिकल्स और एक्सचेंज पार्टिकल्स. Field particle also called gauge bosons. The interacting particles continuously emit and absorb field particles. The emission of a field particle by one particle ये है nuclear force के about ये gauge bosons के जरिए जो है ये act करते हैं, and its absorption by another manifests as a force between the two interacting particles. In the case of the electromagnetic interaction, for instance, the field particles of photons. ठीक है, electromagnetic के केस में field particles photon है, nuclear के केस में bosons. और इसी तरह in the Lange modern physics, electromagnetic force is said to be mediated by photons, and photons are field particles of the electromagnetic field. Likewise, the nuclear force is mediated by field particles gluons. Sorry, ये देखें जो nuclear force है उसके फील्ड पार्टिकल्स हैं वो ग्लूऑन्स हैं. चलिए ग्लूऑन्स के थ्रू जो है वो एक्ट करते हैं. वीक फोर्स इज मीडिएटेड बाय फील्ड पार्टिकल्स कॉल्ड बोसॉन्स. ठीक है, तो ये बोसॉन्स एक्चुअली ये वीक फोर्स के अबाउट जो है उसका बात है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आपको पता है ग्रेविटॉन्स. ठीक है, ये देखिए ग्रेविटॉन्स हैं
सो ग्रेविटेशनल फोर्स के ये जो फील्ड पार्टिकल्स हैं वो हैं ग्रेविटॉन्स। उसके बाद देखें ये डिटेल है आपके पास इन ऑर्डर न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। और ये रिलेटिव की स्ट्रेंथ बताई हुई है। अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रेंथ 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो 10⁻² टाइम्स कम हो जाती है। फिर वीक फोर्स 10⁵ टाइम्स, ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻13। फिर इनकी रेंजेस हो गई रेडिएटिंग पार्टिकल्स, अभी हमने जैसे डिस्कस किया ग्लॉन, फोटॉन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक के लिए बोसॉन्स और ग्रेविटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मास ऑफ फील्ड पार्टिकल, वीक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके सामने डिटेल्स। उसके बाद देखें एंटी पार्टिकल्स की बात की जाती है। एंटी पार्टिकल्स जो है वो तमाम जो पार्टिकल्स हैं उनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिट्रॉन्स एंड अदर एंटी पार्टिकल्स जो है, ये हमारे हेडिंग है। तो इसमें सबसे पहले देखें पॉजिट्रॉन जो है वो किसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसी तरह और जो हमारे पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, उनके भी एंटी पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। Part like dual quantum mechanics, mechanical description of the electron that successfully explain the origin of the electron spin and its magnetic moment. His theory had one major problem. However, its relativistic wave equation required solution corresponding to negative energy states. पॉल लेरॉक ने क्या सपोज किया जी, हर पार्टिकल का जो है वो एंटी पार्टिकल। तो लेरॉक circumvented this difficulty by postulating that all negative energy states are filled. The electrons occupying these negative energy states are collectively called the Dirac sea. But again, this process is described by the non-isolated system model as energy enters the system by some transfer mechanism. System energy increases and the electron is excited to a higher energy level. The whole can react to external forces and is observable. The whole reacts in a way similar to that of the electron, except that it has a positive charge. It is the antiparticle to the electron. ठीक है, तो जो एंटी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है। तो इसी तरह जो दूसरे पार्टिकल हैं उनके भी एंटी पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। So this theory strongly suggested that antiparticle exists for every particle, not only for fermions such as electron, but also for bosons. ठीक है, it has subsequently been verified that practically every known elementary particle has a distinct antiparticle. ठीक है, तो इसमें देखें मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं जो है वो डिस्कवर किए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का एंटीपार्टिकल, न्यूट्रॉन का एंटीपार्टिकल, इससे हम गो थ्रू करेंगे। और जो पॉजिट्रॉन है वो कार्ल एंडरसन जो है उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया था, ये उसके पास बबल चैम्बर था। तो बबल चैम्बर में जब उसने हाई एनर्जी गैमा रेज जो है वो पास की तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक और पार्टिकल है जो उसके अपोजिट डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो पार्टिकल उसकी मास भी सेम है, चार्ज है वो पॉजिटिव है, सेम मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव चार्ज, से उसको उसने जो नाम दिया पॉजिट्रॉन। सो मोस्टली जो सोर्स है पॉजिट्रॉन प्रोडक्शन का वो है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, हाई एनर्जी गैमा रे आती है सॉलिड के करीब, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस के करीब, और वो ब्रेक हो जाती है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, या कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी गैमा वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये मैटर कन्वर्जन भी है, एनर्जी कन्वर्जन भी इनटू मैटर। नेक्स्ट देखें इन पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखें हमारे पास
All particles other than field particles can be classified in two broad categories, यानी electrons और leptons. इनमें जो है हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है. Other than field particles के अलावा. The criterion for separating these particles into categories is whether or not they interact by the strong force. ठीक है, तो strong force के लिए रिएक्ट करता है या नहीं करता है, ये इसका क्राइटेरियन है उनको सेपरेट करने का. The nuclear force between nuclei in a nucleus is a particular manifestation of the strong force, but we will use the term strong force to refer to any interaction between particles made up of quarks. For more detail on quarks अभी देखें नेक्स्ट लेक्चर में हम quarks तक पहुंच जाएंगे, ठीक है. ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है. और इसमें अप डाउन और स्ट्रेंज quarks जो हैं मिलके पार्टिकल बनाते हैं. किस तरह बनाते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. तो उससे पहले देखिए ये कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है. उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे हम फैमिली है. उसके अलावा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यूऑन है, ठीक है. म्यूऑन न्यूट्रिनो है. और इसके अलावा और पार्टिकल हैं. इसी तरह एटॉम्स में हमारे पास देखें पाइऑन है, केऑन है, ठीक है. तो ये पार्टिकल्स हमारे लिए नए हैं. इस तरह बेरियंस है. प्रोटॉन से हम फैमिलियर हैं, न्यूट्रॉन से भी हम फैमिलियर हैं, ठीक है. तो इस कैटेगरी में आ जाता है. तो हेड्रॉन जो है so particles that interact through the strong force as well as through the other fundamental forces are called hadrons. The two classes of hadrons are mesons and baryons are distinguished by their mass and spins. Mesons जो हैं all have zero or integer spin, ठीक है. All mesons decay finally into electron, positron, neutrinos and photons. The pions are the lightest known mesons and have masses of approximately 1.4 × 10⁻² megaelectron volt per cc. And all three pions, pi positive, pi negative, and pi not neutral, have a spin of 0 in spin level 0. This spin 0 characteristic indicates that the particle discovered by Anderson in 1937, the muon, is not a meson. The muon has spin 1/2 and belongs to the lepton classification described below. उसके बाद baryons हैं. ये baryons में देखें क्या है. The second class of hadrons have masses equal to or greater than the proton mass. The name baryon means heavy in Greek language में heavy चीज़ को baryon कहते हैं. And the spin is always a half integer. Okay, 1/2, 3/2, etc. Basically, protons and neutrons are baryons. Okay, belong to category में आते हैं दोनों, as are many other particles. उसके अलावा देखें, with the exception of proton, all baryons decay in such a way that the end product include a proton. Okay, the end product में proton भी जरूर होता है. For example, baryon called hyperon. Okay, hyperon जब break करता है या decay करता है to lambda naught baryon in approximately 10⁻⁻10 seconds. The lambda naught then decays to a proton and a pion negative in approximately 3 × 10⁻10 seconds में वो इसमें proton में भी decay कर देता है pion. Today it is believed that hadrons are not elementary particles but instead are composed of more elementary units called quarks. Okay, तो hadrons जो हैं वो further quarks पे मुश्तमिल होता है. Leptons from the Greek leptos meaning small, ठीक है, light.
बेरियम हैवी हो गया और इलेक्ट्रॉन्स लाइट particles that do not interact by means of a strong force. All electrons have spin 1 by 2, unlike protons, which have size and structure. Electrons appear to be truly elementary, meaning that they have no structure and are point-like. Quite unlike the case with hadrons, the number of known electrons is small. Currently, scientists believe that only 6 electrons exist. Okay? 6 electrons exist करते हैं. The electron, the muon, the tau, and neutrino associated with each. We get E negative, mu negative, tau negative, V mu, nu, and nu tau. The tau electron, discovered in 1975, has a mass about twice that of proton. Direct experimental evidence for the neutrino associated with the tau was announced by Fermi National Center Laboratory in July 2000. Each of the 6 leptons had an antiparticle because of antiparticles exist करते हैं. So current studies show that indicate that neutrinos have a small but non-zero mass. If they do have mass, they cannot travel at the speed of light. In addition, because so many neutrinos exist, their combined mass may be sufficient to cause all matter in the universe to eventually collapse into a single point, which might then explode and create a completely new universe. ये एक और चीज़ है, ठीक है, किस तरह से और एक और यूनिवर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं collapse करके. उसके बाद कंजर्वेशन लॉज हैं, ठीक है. कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो इस लेवल पे भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद बेरियंस हैं. बेरियन देखें, बेरियन के केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये लॉ है, इसको हम देखते हैं. Experiment results show that whenever a baryon is created in a decay or nuclear reaction, an anti-baryon is also created. This scheme can be quantified by assigning every particle a quantum number. The baryon number as follows: B is equal to positive 1 for all baryons, B is equal to negative for all anti-baryon, and B is equal to 0 for all other particles. The law of conservation of baryon numbers वो क्या स्टेट करता है? Because whenever a nuclear reaction or decay occurs, the sum of baryons numbers before the process must equal the sum of baryon numbers after the process. पहले और process के बाद में जो है वो baryon numbers जो है वो same रहना चाहिए. So this implies the baryon number is conserved, the proton must be absolutely stable. ठीक है, तो फर्दर आप इसको रीड कर लेंगे. ये है हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स. इसके बाद जो है लास्ट हमारे पास जो है वो टॉप्स आ जाता है. ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा टॉप्स. As mentioned earlier, leptons appear to be truly elementary particles because there are only few types of them, and experiments indicate they have no measure compared to the size or internal structure. Leptons, on the other hand, are complex particles having size and structure. The basis of the strangeness. Actually, ये देखें, ये हमारे पास है strange particles and strangeness. ठीक है, तो उसमें भी टॉप्स पे अभी हम मूव करते हैं. उसमें सबसे पहले देखें, many particles discovered in the 1950s were produced by the interaction of ions with protons. Like an ion plus proton gives K naught plus lambda naught. Reaction pi naught pi negative plus proton gives A naught plus neutron. Where only one final particle is strange. Never occurs. ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स है आपके पास हैं. ठीक है, तो ये पेयर में आपके पास प्रोड्यूस होते हैं. ये यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया कि हमेशा पेयर में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. क्योंकि कैसे डिटेक्ट करें, ये देखें बबल चैम्बर. ये बबल चैम्बर बताता है बहुत से पार्टिकल्स जो है वो
strange trajectory जो है वो show करते हैं. In this bubble chamber photograph shows many inlets and the inset is drawing of identified tracks. The strange particles lambda naught and k naught are found at the bottom as a pi negative particle interacts with the proton in the reaction. देखें pi negative plus proton k naught plus lambda naught. दो आपके पास strange जो है particles pair में use होता है. Notice that the neutral particles leave more tracks as indicated by the dash line in the insert. Well, lambda naught then decays in the reaction. Lambda naught gives pi negative plus proton, and k naught in the reaction. K naught gives pi positive plus mu negative plus mu bar mu. उसके बाद देखिए to explain these unusual properties of strange particles, a new quantum number, ठीक है, एक नया quantum number s और strangeness जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. तो prediction of strange particle base is handled mathematically by signing. किस तरह से उसको हैंडल करते हैं. s जो है वो पॉजिटिव one of the particles, और s is equal to negative to the other particle, we assign it, and s is equal to 0 to all non-strange particle जो है वो assign कर दिए जाते हैं. The law of conservation of strangeness states that in a nuclear reaction or decay that occurs by the strong force, strangeness is conserved. That is, the sum of the strangeness numbers before the process must equal the sum of the strangeness number after the process. In processes that occur while a weak interaction, strangeness may not be conserved. Okay? So, उसके बाद जो है वो देखें हमारे पास जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हेड्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इन दे कंसिस्टेड ऑफ कॉक्स. द ओरिजिनल कॉक मॉडल है वो जर्मन एंड जॉर्ज जो है independently propose a model for the substructure of hadrons. According to the model, all hadrons are composed of 2 or 3 elementary constituents called quarks. 3 quarks for Mr. Mark and James Jones. ये देखिए इसके बारे में ये डिटेल है. He called constituents aces. The model has 3 types of quark designed by symbols up, down, and strange. They are given the arbitrary names up, down, and strange. The various types of quarks are called flavors. तो इसमें देखें quarks जो है ये इनका प्रपोज स्ट्रक्चर है. Mesons, baryons ये देखें up, down. K नेगेटिव में देखें आपके पास up और strange U बार के साथ. और इसमें हम देखें आपके पास baryons में प्रोटॉन अप अप डाउन, न्यूट्रॉन में अप डाउन और डाउन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ 2 mesons एंड 2 baryons. उसके बाद ये फर्दर उनके बारे में डिटेल है. ठीक है, अप डाउन, स्टेज, चार्म, बॉटम, ये डिफरेंट टाइप्स हैं. उनकी वैल्यूज है सिंबल, स्पिन, चार्ज, सारे डिटेल्स में गिवन है. तो लास्ट में जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो देखें. An unusual property of quarks is that they carry a fractional electric charge. The up, down, and strange quarks have charge of positive 2e/3, minus e/3, and minus e/3 respectively. E is the elementary charge, 1.6 into 10 raised to power minus 90 coulombs. These and other properties of quarks and anti-quarks are given. Quarks have spin
1/2, which means that all quarks are fermions. Defined as any particle having half a degree spin, as pointed out in this section already. Associated with each quark is an anti-quark of opposite charge, baryon number and strangeness. ठीक है, तो quark के लिए भी एंटी quark जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके साथ ही जो है ये हमारा लेक्चर जो है एंड होता है। ठीक है, तो हमने quarks के बारे में देखा मॉडल, उसके अलावा हमने देखा हेड्रॉन्स। ठीक है, कि फंडामेंटल पार्ट जो सब पार्टिकल्स मेनली मल्टीपल कंसिस्ट होता है quarks के ऊपर, और उसके अलावा कन्जर्वेशन लॉज, इलेक्ट्रॉन, हेड्रॉन्स, पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन और फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद जो है दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाती है, फिर वीक फोर्स है, और फाइनली लास्ट में हमारे पास लॉन्ग रेंज बट वेरी वीक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये फोर्सेस किन फील्ड पार्टिकल्स के थ्रू जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसके साथ ही हमारा सिलेबस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड होता है, और आई विश कि आप लोगों के फाइनल के एग्जाम्स जो हैं अच्छे हों। सो विद दैट वी एंड दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम एंड wish you best of luck for your final exams. So till then, take care and Allah Hafiz.